बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome to you all, teachers and students from Madam Samar and the management of this very debate competition. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. मैं अब दावत दे रहा हूँ 8वीं जमात की तालिबा अनीसा को. I request to come over here and recite Holy Naat. के नात शरीफ का नजराना बहुसुर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें. अनीसा फ्रॉम क्लास both languages. In English, we have the topic to be discussed and debated is that video games make you smarter. Assalamualaikum, this is Matric from class Matric, and this is Aiza from class 8, Maryam from class 9. Inshallah from class 8, and we're here to prove that video games makes us smarter. Hello everyone, Assalamualaikum. I'm Hania Aziz from grade 10, and this is my teammate Abdullah from grade 10. This is my teammate Alishba from grade 8, and this is my teammate Alishba from grade 9. And today we're going to talk about how video games do not make us smarter in any way. I truly believe video games make us smarter. They improve focus, memory, and problem solving. Many games require planning, teamwork, and decision making, all skills that make the brain sharper. Studies even show that video games can increase creativity and reaction time. The castle isn't creativity, it's entertainment. True creativity comes from making things that exist in real world. And the game teaches us some life lessons. Like Minecraft teaches us that creativity has no limits, and Free Fire and PUBG teaches us teamwork. And some games also teaches us patience and to never give up, like Geometry Dash. But they are also future challenges. As a child, may just decide to sit already and play games as a professional. For remembering patterns, math, and rules, training both short-term and long-term memory. Players learn to set goals, track progress, and overcome obstacles, which can translate to real-life skills like time management. And The more time to screens can lead to poor eyesight, laziness, and aggressive behaviors. And due to addiction, they can also affect their mental and physical health. Moderate video games can have various benefits and may not significantly impact health if balanced with other activities. Some potential benefits include improved cognitive skills such as problem solving ability, multitasking, and decision making, better hand-eye coordination, and fine motor skills. Failing in a game costs nothing. Real life resilience comes from dealing with consequences that matter. There are no response or checkpoints in the real world. Chess, checkers, sequence, and other games require players to think quickly and plan strategy and solve puzzles. Those are not actually considered as video games. Those are physical games.
The games that she stated aren't very video games. They are actually physical games. Video games can be a fun and effective way to develop intellectual skills. They offer a unique learning experience that can complement traditional education. Developing these skills can improve reaction time and overall coordination. So, gaming might improve reaction time, but I don't think anyone values faster reflexes over good eyesight. Hours of screen time strain eyes and harm long-term health. No reflex is worth that price. Besides, when was the last time reaction time has been proven to be useful to you except That's why I said moderate gaming. A little fun, a little learning, perfect combo. Even pilots and doctors are using simulation games for training these days. Moderate gaming has an environmental effect that through energy consumption from devices and data centers. Moderate gaming isn't inherently bad, but the line between healthy and harmful is crossed with excessive play. What would you like to say about that? There is no any such scientific explanation about this. modern games aren't designed for fun? They are neurological hacks that use variable reward systems and FOMO, the fear of missing out, to create compulsion and keep players constantly engaged. Video games are complex puzzles that require problem solving and quick decision making skills. Multiplayer games involve teamwork and communication, boosting social skills, teaching cooperation and leadership. These are actually highly simulated, causing bad eyesight and could also cause many mental disorders such as anxiety, depression, and disorders like schizophrenia. That's why I said moderate gaming, but still there is no conclusive evidence that video games directly cause suicide. The American Psychological Association states that video games can provide social connections, stress relief, and a sense of accomplishment for many people. Video games provide an easy escape from real-life problems. Instead of learning how to solve conflict and cope, players turn into a virtual world, leaving real issues unresolved. A study by Swing in 2010 shows that heavy gaming causes impulsive behavior and shorter attention span. Analytical thinking, players analyze situation, identity, patterns, and make informed decisions. Video games have been linked to self-harm, isolation, stress, mental strain, and suicidal thoughts in vulnerable individuals. A study by Levin in 2011 shows that heavy gaming is linked to higher depression and anxiety in There is teens. no conclusive evidence that video games directly cause suicide. The American Psychological Association states that video games can provide social connections, stress relief, and a sense of accomplishment for many players. Harmful. Here, there are a lot of educational videos, games that help children study and understand educational concepts. Video games aren't always used as an educational source, and video games can also be a platform for strangers and predators to get access to your and your children's information. Most gamers aren't learning anything, they are chasing loot boxes. Any skill learned is incidental, not They intentional. were built for spoiling kids, leading them to suicide, self-injury, addictions, and other things. But games are built to reduce stress, so games are not responsible for the cases you're talking about. Gaming amplifies risk of self-harm by promoting addiction, social isolation, and constant stress, making it more likely. There is no conclusive evidence that video games directly cause suicide. The American Psychological Association states that video games can provide social connections, stress relief, and a sense of accomplishment for many people. Actually, there is evidence. A study by Levin in 2011 shows that heavy gaming is linked to higher depression and anxiety in teens. In this digital world, career opportunities for gamers is wide. Many gamers are following their passion on different platforms like YouTube, and audience are loving them. Like Suman Hassan Sayed is the youngest gamer to surpass $1 million income from certain gaming tournaments. During two competitions is known for his games for Actually, the plays is low performance satisfaction of genuine accomplishment with quick manufactured validation like trophies and levels. This corrupts our instinctive motivation to learn and achieve in the real world, training the brain to react accordingly and quickly, improving coordination, reflexes. Games teaches history, science, or other subjects in an engaging, interactive ways, like theory, World War II, and Asian Sleep Building. Time also promotes self-harm, killing, and violence. It depends on the child's mindset. It's not the game. It is affecting and producing the mindset. So the parents should keep an eye on the child. How much can you restrict a growing mind? We said moderate gaming several times. Video games
are designed to be addictive. What starts as a half-hour session stretches into 2 or 3, keeping players hooked, disturbing their daily lives. In today's digital, video games are not just entertainment, but they are mental workout that sharpen the brain. Video games may seem enjoyable at a point, but children can get addicted to video games right away. This may affect children's mental and physical But Pakistan has produced some incredibly talented gamers who made a name for themselves. Globally, such as Faisal Siddiq from Lahore, who made an earning of over 4,20,000 to 4,20,000 in prize money. Other examples include Athen Bhatt and Ford Faisal. Becoming a pro gamer is a lottery you win. Most only are addiction and wasted time, not fame or money. The odds of a gamer going pro are 1 in 10,000. I ordered gaming several times. Just half an hour a day or 1 hour. Excessive gaming can contribute to various mental health problems, including addiction, social isolation, anxiety, depression, and many more. That's why I said moderate gaming, a little fun, a little learning, perfect combo. Even pilots and doctors are using stimulation games for training these days. In fact, there is no scientific explanation telling that video games are the reason for addictions and suicide, self-harm, self-injury are also played by adults so that they can freshen up their minds and prevent overthinking for a few times. And in some cases, doctors also tell their patients to play calming games to prevent overthinking problems. Video games give us temporary pleasure, which increases our brain hormone level at an extent. That's why we need to invest in other activities like schools and families. If we feel something difficult or hard, this gives us the motivation not to giving up on it and face it. Improves memory. Games often require remembering math, quests, or strategies, enhancing memory capacity. On the other side, video games also pollutes a child's mind. When you talk about it increasing your mentality or improving your mental health or in any way improving your thinking skills, it also pollutes the mind and can lead you to many disorders such as self-isolation, anxiety, depression, schizophrenia, and Parents should keep an eye on child, and there are several games. That teaches self-defense. Self-defense is the key thing in your life. You should learn that, of course. But it's a physical thing. You cannot just learn self-defense from a simulation. You have to learn that physically. So how can games be responsible for the suicide and self-injury you're talking about? Because children waste hours of playing games which replace physical activity with hours of sitting, harming posture, contributing to obesity and weakened muscles, unlike sports or outdoor activities. And age-limited restrictions वगैरह. And they can always log in from an account from any restricted. So that's not the reason. So you can't blame the video games for that, okay? You totally can. You can blame video games for polluting a young's mind. Video games are not responsible for it. Children's making new accounts and accepting the limited restrictions वगैरह. So the fault is our parents, elders. We need to keep an eye on children. Parents are not always at fault. Video games create a sense of aggression in kids, often leading to them arguing with their parents and not listening to them. Video games can be the main effect on a child's mind. There are disadvantages of everything present in this world or every generation, but sometimes we just need to take a look on the positive side. Game teaches us some life lessons. Minecraft teaches us that creativity has no limit. Free Fire and PUBG teaches us teamwork, and some games also teaches us to never give up. The last point. The last. You feel that video games improve problem solving, strategy, and multitasking. This is true, but only in a limited context. These skills are very highly specific and really transfer to school, work, or real world challenges. Plus, the mental cost, stress, and addiction and isolation outweighs these minor benefits. And even if video games can give you a little tad bit of creativity, they are promoting you towards self-harm, and as you said, Free Fire also promotes violence, extreme violence in that case. Games can be played in a disciplined manners, and games aren't just about winning. They're about trying again even after you lose 100 times.
So yeah, maybe games doesn't make you Einstein, but they do make you tougher and smarter. Games teaches us history, science, and other subjects in an engaging, interactive way, like COD, World War II, and Asian Creed Brotherhood. This debate, our senior judges, Sir Aslam Lunani and Miss Saima Sardar are watching closely, and they are preparing the result, and they will announce after the program is ended. Okay. रिश्तेदारों को और दूर कर दिया या करीब कर दिया, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारी जो दो टीमें यहाँ मौजूद हैं, एक हिमायत में और एक मुखालफत में। आप तमाम स्टूडेंट्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि ये अपना अपना तारुफ करा दें। सबसे पहले मैं 10 की तरफ आता हूँ। मेरा नाम रशते है और मैं जमात से कह रही हूँ। मेरा नाम शाया है और मैं जमात में रहती हूँ। मेरा नाम मैडम है, मैं जमात मशहूर की मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, जमात नंबर। मेरा नाम है और मैं क्लास 8 जो हमारे यहाँ पे बॉयज बैठे, इनमें से जो है मोहम्मद अहमद इस वक्त अपने कुछ दलाइल पेश करेंगे, कुछ दलील पेश करेंगे। देखते हो क्या कहते हैं। सोशल मीडिया ने रिश्तों को करीब किया है। वीडियो कॉल के जरिए हम अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं, एक स्क्रीन के जरिए उनको अपने घर में महसूस कर सकते हैं। और रिश्तेदार हम अपने जो रिश्तेदार हमारे मुल्क में नहीं है, दूसरे ममालिक में है, उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनसे करीब हो सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। मैं अपनी बात से इत्तेफाक करती हूँ, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जहाँ सोशल मीडिया ने रिश्तेदारों को करीब किया, वहाँ उनमें दूरी भी पैदा करती है। हमारे वालिदैन और बहन भाई हमारे बराबर बैठे होते हैं, लेकिन हमें उनसे बात करने की तौफीक नहीं होती, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ रात में बैठ के बातें करते हैं, जिसकी वजह से हमारे खूनी रिश्तों में दरार आ जाता है और दूरी हो जाती है। कि जो बराबर में हमारे से बहन भाई हैं, हम उनको टाइम भी देते हैं, जैसे आप कह रही हैं, लेकिन मैं आपकी बात से मुखालफत नहीं रखता। हम उनको टाइम देते हैं, क्यों नहीं देते? रात को जब पूरी फैमिली एक साथ दस्तरखाने बैठ के खाना खाती है तो वो टाइम देना ही होता है। और अब मैं जो बात करता हूँ अपन चीज़ की, तो उसमें हम जैसे कि भारत ममालिक में हम जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। जो हमारे जो रिश्तेदार दोस्त वगैरह हैं, वो हमें बताते हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। इधर से बहुत बेनिफिट है भारत मुल्क में हमारे, और हम भारत मुल्क में जाके बहुत से काम कर सकते हैं, और यहाँ से बैठ के भारत में काम कर सकते हैं। हम कॉल सेंटर वगैरह है वहाँ पे। हम रिश्तेदार की बात है, जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों को अपने काम में ले सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और उनको हम बहुत काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमें बाहर से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हासिल होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में फ्रॉड और क्राइम बहुत बढ़ चुके हैं। जितना भरोसा अपने वालिदैन बहन भाई पर कर सकते हैं, उतना हम किसी बाहर की शख्स पर नहीं कर सकते। हमें क्या करना, वो झूठ बोल रहा हो, और इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की बात पर इत्तेफाक करें, उनकी बात को सुने, क्योंकि उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, उनको हर अच्छा बुरी चीज़ की मालूमात होती है। तो आप इस बारे में क्या कहें? अब जो फ्रॉड की बात है, होते होंगे कुछ, हर जगह गंदगी होती है, तो 1-2% लोग फ्रॉड कर देते होंगे गोरे लोगों में, ऐसे गोरे लोग फ्रॉड नहीं करते। सोशल मीडिया से एजुकेशन भी बहुत मुतासिर होती है। जैसे कि हम लोग कुछ मोहल्ले के दोस्त एक ही एज ग्रुप के जो एक ही क्लास में है, वो आपस में व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स बना के अपने अपने स्कूलों की क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर शेयर करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ताकि बोर्ड में 10 मिनट पहले एमसीक्यूज लीक हो जाते हैं, और ऐसे आपस में क्वेश्चन पेपर शेयर करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई हेल्प हो सकती है। और फेसबुक वगैरह पे भी ग्रुप्स होते हैं जिनमें नोट्स और वेबसाइट्स वगैरह होती है, जिनसे हमारी कामयाबी हासिल होती है हमें इम्तिहान में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसकी वजह से नकल चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे चीटिंग की पेपर में चीटिंग ही करते हैं। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी के तौर पे सोशल मीडिया को एजुकेशन प्लेटफॉर्म के
तौर पे यूज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी बच्चे के लोग इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली नहीं है, लेकिन बच्चे इससे सीखते हैं और फिर आपस में जब इस बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ें फैलती हैं और वो बुरी चीज़ें सीखते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको यूज करे। जैसे अगर बंदा चाहे तो उसको अच्छी तरह भी यूज कर सकता है और बुरे तरीके में भी यूज कर सकता है, इसमें सोशल मीडिया की कोई गलती नहीं है, वो तो बंदे पे डिपेंड करता है। यही तो बात है, हम लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट को सिर्फ तफरीह के तौर पर यूज करते हैं। हम क्या रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, बाहर के आमने सामने कहा कि बाहर के मुल्कों में रिसर्च हो रही है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, रात में बैठे रहते हैं 4-5 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं सिर्फ तफरीह के तौर पर। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जरूरी थोड़ी है रात को अपने दोस्तों से बातें करो कि आप रात को देर तक पढ़ रहे हो, लेकिन तो बंदे पे डिपेंड करता है ना। हम आजकल सारे एंटरटेनमेंट भी यूज करते हैं सोशल मीडिया को, एंड इनफैक्ट अपने वालिदैन को भी उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते, हम ज़्यादातर स्कूल भी रहते हैं, मोबाइल से यूज करते हैं। आप क्या बोलना चाहिए? वैसे तो गरीब ही है, किसी का हम वालिदैन से बातचीत नहीं करते, बिल्कुल हम वालिदैन से बातचीत करते हैं, अपने उनसे मशवरा भी लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। और जैसे कि आपने कहा सेहत तो 8 घंटे हम सोते ही हैं, हम 8 घंटे हम सोते हैं, स्कूल में आगे अलग सोते हैं, हर पीरियड में मैथ्स पीरियड में सोते हैं जैसे, और उसमें बहुत नींद आती है। और तो 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर वक्त पे खाना ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ हम अपना टाइम पे ही कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे आपकी लेकिन सिर्फ नींद नहीं है जो अफेक्ट होगी, हमारी आंखों में अफेक्ट होगी, हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे इसमें बच्चे बहुत सुंदर काम कर रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें खींच के डालते हैं और समझते हैं शो के लिए यूज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को, बता रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो सही इस्तेमाल नहीं है सोशल मीडिया का। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपका फायदा है, आपकी जो सराउंडिंग होती है आप उससे पढ़ते हैं। अगर आप सराउंडिंग में कचरा देखेंगे और ये बदबूदार चीजें देखेंगे तो आपकी सोच हो ही रहेगी। और आप सराउंडिंग में अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी गाड़ियां देखेंगे, अच्छे बंगले देखेंगे, तो आप उसी चीज में बढ़े रहेंगे, आप उसी चीज की आपकी थॉट रहेगी जिंदगी में कि मुझे ये अचीव करना है यार जिंदगी में। तो आपकी सराउंडिंग के ऊपर होता है आपकी मेंटल। लेकिन हमारा दिल तो नहीं कहता कि हम मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, हम आत्मपरस्त बन रहे हैं, हमें तो बस अपनी आंखें से देखनी है। सोशल मीडिया जैसे कि आपने कहा कि हम तरक्की करते हैं, हमारी सोच बड़ी होती है, लेकिन जब कुछ हासिल करने के लिए आपको इंतजाम नहीं करना पड़ता है। ये थोड़ी कि आप बस देखें कि सामने वाला क्या कर रहा है बस ये करना शुरू करें। आप इसका क्या कहते हैं? आप अगर कोई चीज देखेंगे तो आप उसको अचीव करने की दिल में थॉट रखेंगे, अगर आप देखेंगे ही नहीं तो आप सोचेंगे कैसे? जो चीज आप देखते हो जिंदगी में वही चीज आपको हासिल करनी होती है। अब आप कोई चीज देखोगे नहीं तो आपको पता क्या होगा क्या आपको करना क्या है जिंदगी में। ये है कि जो आप चाहें आपको वही मिले, अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। और ये कोई बात नहीं हुई कि आपने देखा कि हम सामने वाला ये कर रहा है, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास ऐसी गाड़ी, तो हमें भी यही चाहिए।